Assalamu alaikum viewers. This is your host and your host Aisha Ahmed, and I welcome you all to another episode of Beyond Textbook. So today, the guest we have with us is a renowned finance expert and is currently working in Standard Chartered Bank. And apart from that, he has been in the teaching experience from about past 15 to 16 years teaching taxation and finance reporting. And apart from that, moreover, he is an ICAEW finalist, which makes him a named teacher in this field. So, without any further ado, let me introduce you, Sir Kambar Raza. Assalamualaikum. Thank you so much, sir, for joining us. We are so glad to have you here. Likewise. ओके सर तो मतलब स्टार्ट आई डू ऐसे कि मतलब आपने ACCA ज्वाइन किया मतलब इन द टीचिंग फील्ड विद सो मच ऑफ लाइक हेवी सब्जेक्ट्स व्हिच आर सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सो हाउ डू यू हैंडल दिस So basically, I always of the view that I should give back to my community. ऑफ कोर्स Initially, it was a passion, and it continued as a passion. And just to share with you, when I was in metric, I do recall I do give tuitions to class 8 or 9 students. व्हेन यू वर इन मैट्रिक When I was in Oh, metric, mashallah. so interesting, and probably I joined myself as a teacher assistant back in 2008. I do recall I completed half of my ACCA. Very interestingly, मुझे ये अभी भी याद है कि I used to guide students in the study room, in the library, and when I joined TS as a teacher assistant, तो उस वक्त जो FIA के students थे, they were very happy कि यार ये वही बंदा अब टीचर असिस्टेंट बन गया है जो हमें वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड या विदाउट हैविंग एनी ऑब्लिगेशन सपोर्ट करता रहता था. सो एक फेमिलियर फेस से हेल्प लेना इज वेरी इजी and now the capacity of that face change as a teacher assistant. So my mother is a teacher. I don't know why, but I really love teaching. I really love the respect which I get from the teaching. That's why I was and I am, and inshallah I will remain in the teaching side as well. Of course, sir. क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है आई बिलीव जहाँ पे रिस्पेक्ट और मतलब आपका एक दफ़ा नाम बन जाए तो फिर आई बिलीव इट्स अ फुल टाइम जॉब एंड तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली कि मतलब आप अलोंग विद वर्किंग इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड हाउ डू यू मैनेज लाइक योर टीचिंग व्हिच इज आल्सो अ फुल टाइम जॉब So a very good question. How I manage. So this is normally a question to me by my students as well, Yeah. and in particular on Sundays, because on normally Sunday I keep my class somewhat at 9 a.m. or 10 a.m. and my students are like, sir, why you are here on 9 a.m. or 10 a.m. So I respond to them, so two reasons. First, what you do on weekends. So normally you do weekends, whatever is your passion, whatever is your hobby. Of course. Teaching is not my profession. Teaching is my passion, is my hobby. So that's why I spare time for teaching on weekends. Having said that, my teaching is now bit reduced with respect to timing. Okay. Previously, I used to teach 10 to 12 hours on Saturday and 10 to 12 hours on Sunday. And this is somewhat 4-5 years back. COVID के बाद थोड़ा जंग लग गया. But I used to teach that much time. Now, reduced timing, one element is of family as well. Considering my family, just to share with you, I have, mashallah, 3 daughters. The eldest one is like 9, then 8, and the youngest one is like 3 years. So they have their weekend plans. So I am with them. Like for Saturday, Baba is not touchable, Baba is not approachable. But on Sunday, till the It's time their you time. guys up, you guys done with your breakfast, Baba would be back home, and then rest of the day belongs to you. That's why I keep That's it on great. Sunday. अच्छा सर जैसे जस्ट यू मेंशनड कि बिफोर कोविड यू यूज्ड टू वर्क लाइक 10 to 12 hours on the weekends तो मतलब आफ्टर आपने 15 साल काम किया है सो मच ऑफ ड्रास्टिक चेंज हैज हैपेंड टेक्नोलॉजी ने इतना टेक ओवर कर लिया ऑनलाइन थिंग्स हैज हैपेंड तो हाउ डू यू मैनेज दैट सो वेरी इंटरेस्टिंगली कोविड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था. द रीज़न बीइंग द टेक्नोलॉजी और द वे ऑफ टीचिंग विच वी आर यूजिंग पोस्ट कोविड I have already adopted it since 2016. So probably I am one of those in ACCA or in TSA
जो पहले से लैपटॉप प्रोजेक्टर पहले से ही वगैरह के familiar था। थ्रू हम जी। ऑलरेडी क्लासेस कंडक्ट करते थे. That's really nice. सो जिसकी वजह से ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड व्हाट गोज अप इज ओनली connectivity via Zoom. Else, Okay. there was no change for me. Okay, but बाकी everything you were familiar Yeah, earlier so, also. like I don't need really any capital investment as well in Yeah. terms of buying laptop or any such equipment. हाँ, capital investment was in terms of taking Zoom license Oh. only. That's great. अच्छा सर, मतलब आपका जैसे F6 का पेपर is quite heavy to attempt. So मतलब what advice do you want to give to students के मतलब first attempt में पेपर निकालने के लिए क्या करना चाहिए उनको? Oh, that's so probably that would not be very much insights. So just to share with everyone, क्या करना चाहिए लोगों को पेपर पास करने के लिए is F6 में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, अनलाइक FR एंड अदर पेपर जहाँ पे मोटी मोटी थोड़ी सी चीजें. सो व्हाट आई एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज रोज का काम रोज अपडेट करते रहो. And one thing which I used to follow back in my students' time, back in 2007, which when I studied my own TX exam, जिस दिन जो काम मिल रहा है टीचर काम करवा रहे हैं, ट्राई योर बेस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लो. रिविजन इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लिखा हुआ पढ़ लो, रिविजन इज इन टर्म्स ऑफ इट शुड बी जो जो चीज़ें सर ने क्लास में लिखवाई नोटेड डाउन बाय योरसेल्फ, जो एग्जाम्पल्स क्लास नोट सर ने क्लास में करवाए attempt it at your own. If answer reconciles, it's perfect. If not, if you have any difficulty, immediately ask before start of next class to your teacher and get it clarified. That's so nice. And via this thing, your retention would also increase a lot. Yes. Like probably अगर मैं एक चीज़ मुझे आज टीचर ने पढ़ाई और मैं उसे एक महीने बाद ओपन अप करके देखूं, it's very difficult to recall. प्लस रिकॉल हो भी जाए तो उसकी मेमोराइजेशन का टेनर बहुत ज़्यादा नहीं होगा. बट इफ़ यू रिवाइज इमीडिएटली लाइक विद इन अ डे और टू, रिकॉल में भी टाइम कम लगेगा एंड मेमोराइजेशन भी उसकी ज़्यादा होगी. सो व्हाट आई एडवाइज ऑलवेज स्टूडेंट्स इज अपडेट योर टास्क एंड वंस यू आर डन विद एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक, उसकी फर्दर प्रैक्टिस फ्रॉम द एग्जाम किट्स वगैरह एंड वट एवर material you get to practice, proceed with it. माशाल्लाह सर, सच अ गुड एडवाइस. अपार्ट फ्रॉम इट सर कि आपके इतने सारे बच्चों ने ऑफ कोर्स पोजीशंस ली हैं एंड ऑफ कोर्स यही टिप्स फॉलो करके उन्होंने पोजीशंस ली होंगी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको ऑफ कोर्स यू रिमेंबर देम और दे आर इन योर माइंड समवेयर कि आप जब भी व्हेरेवर यू रिकॉल समथिंग कि यार ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट, या नॉट अ फेवरेटिज्म टाइप्स बट ऑफ कोर्स कुछ रह जाती हैं यादें, तो कुछ ऐसा स्पेशल इंसिडेंट विद सम स्टूडेंट्स? So there are a lot of students, and just to share with you, I respect all of the students, and in particular, I give a very deep respect to the ones who are working students, yes, or not a full-time student. So I do recall in last session, there was one student who is mother of 2 sons, and she is studying in TSA. Probably I'm discussing about, I'm not taking her name. yeah. She has her son admitted in hospital. She was sick and she was here to attend the class. Sir, you told, please do not miss the class. Important class. Very important class. So, sir, I am here. I was like, being mother, nothing is important than sons. Please go back to hospital, take care of. So, there are so many such type of incidents जो कुछ ना कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं. And there are a lot of memories, at least with me, with respect to these type of students. And again, many jobbed persons or jobbed persons की in particular. So, पेपर पास होना और पेपर फ्लंक होना सबके लिए खुशी और गमी है. बट जो लोग इतने सेक्रीफाइसेस के साथ पढ़ रहे, उनका सक्सेस की खुशी और अनसक्सेसफुल का गम has a different level. And I can feel that because, like I shared, I completed half of my ACCA as a full-time student and half of my ACCA in capacity of teacher assistant in TSA. Okay. So I do feel, I do realize, I do appreciate the hard work of the students, in particular, जो job के साथ साथ इन चीज़ों को manage कर रहे हैं. Of course, it's a big of a task.
और सर अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब व्हेन इट कम्स टू योर फ्री टाइम और मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो जाए या पढ़ाई हो जाए, उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू योर फ्री टाइम व्हाट डू यू डू? मतलब आप वैसे तो इतना बिजी रहते हैं ऑफ कोर्स द होल वीक, बट व्हेन इट कम्स टू योर फ्री टाइम व्हाट इज द फेवरेट थिंग, वन थिंग दैट यू वांट टू डू? Spend time with my daughters only. So I, being father of 3 daughters, mashallah, Sure. what is happiness? Probably not limited to daughters. What's happiness for a parent? Their kids would be happy. Of course. And whatever I had a routine during the whole week. Whatever is my level of tiredness, just I smile, Baba, I want this, I want to go there. That's it. वो कहते हैं ना, एक महावरतन एक कहते हैं, वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, मगर कभी कभी मैं पिघल जाता हूँ. तो only one smile of daughter and any request. So for tomorrow I can tell my daughter has planned to go to cinema. Baba, Sonic Hedgehog has released. You promised. I'm done with my exams. So today, probably post going home, my next task would be to search for Sonic Hedgehog 3 in which cinemas it is in. That's so cute, sir. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बेसिकली एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल ओवर देयर? So my role is the balance sheet manager. Let me tell you what is balance sheet manager. This is something which is particular to banking. It does not exist with other local companies, other manufacturing, trading businesses. It is, to be exact, for example, if I talk about financial accounting, हम उसमें ratio analysis पढ़ते हैं. To achieve certain ratios, what we need to do, what we not need to do. So it is more of an advising role rather than core financial reporting, core publishing financial statement. This role belongs to that side. इसको इस चीज को बढ़ा लो तो ये रेशो अच्छा दिखेगा, इस चीज को कम कर लो तो रेशो अच्छा दिखेगा. यार अभी थोड़ी सी अलार्म बेल्स रेस करनी है, वांट अटेंशन, इस रेशो को बढ़ा देते हैं, फटेगा, लाइक ब्रीच होगा, सबकी नजरों में आएगा. So these kind of tools and how can we improve the returns of the entity? Of course. So that's basically part of this particular role. Okay. अच्छा, without like completing this, लेकिन sir, I just wanted to ask कि आप एक अपने students को ऐसी advice आप क्या देना चाहेंगे which helps them in their career, professional qualification के साथ साथ along with their personal terms also? मतलब एक ऐसी such a good advice that you want to give to all your students. So professional के साथ personal, so initial probably this piece of advice cannot be one for everyone. Phase of life के साथ साथ obviously strategies, advices change होती रहती हैं. But one piece of advice which I normally felt in so many students and so many working professionals, please never leave your gratitude. Be thankful always. Like I can tell you, there are some of the students, once they got position or good marks, they are like, it's our effort. Yeah. It's me who get this. It's not, and rather than thanking to Allah, thanking to teachers, thanking to parents, because I can tell you, whatever I am today over here is due to prayers of my parents, prayer of my mother. Contributed my efforts, yes, agreed, but 100% my efforts without my mother prayers, no. So और कहीं ना कहीं एक वाकया ये भी है कि ग्रेटिट्यूड से ये चीज़ें सारी इंक्रीज होती हैं, इनहेंस होती हैं. डू नॉट थिंक ऑफ लाइक कॉलर अकड़ जाए, यार मैं तो बस आज आई गॉट इंडक्शन इन PWC और बताओ, नो, फायर भी हो जाता है वहाँ से. सो ऑलवेज बी ह्यूमन and treat other people human as well. झुक के मिलने से कोई छोटा नहीं होता. और हजरत अली का एक कॉल है कि अकड़ तो मुर्दों में होती है, इंसान में तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, झुकना आना चाहिए. Such a good piece of advice, sir. I'll make sure the viewers are listening to it, and मैं खुद भी personally अमल करूँगी. So thank you so much. आप नहीं करती अभी? नहीं, मैं करती हूँ. I'm much of a humble person I am. But thank you so much, sir, for all the insights that you gave us today. We are really thankful. So thanks for watching, guys. And if you like the episode, please like, share, comment, and subscribe. And if you want some guests to come or do you have any queries, please comment down below. Thank you so much.